मॉर्निंग गाइस, बहुत ही सुंदर दिन है आज. लुक एट दी वेदर, अमेजिंग. इट्स बैक इन द हिल्स टुडे एंड आज हम लेके जा रहे हैं एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सा एक रास्ता मिला है विद वाइंडिंग हेयर पिन्स, acute turns and it takes on to a beautiful hill climb जहाँ पे एक नॉल के ऊपर there is a running line of trees which looks absolutely mesmerizing. बहुत ही सुंदर है. तो आज विल गो एंड डू अ प्योर राइड, सिर्फ बाइक की आवाज़ एंड नो कॉमेंट्री. तो लेट्स डू दिस. अब करेंगे प्योर राइड एंड अनलीश द फन. अभी हम लोग दुधिया टाउन क्रॉस कर रहे हैं एंड दिस इज वेयर दी मार्केट इज सेट. और अभी दुधिया रिवर एंड दुधिया ब्रिज आएगा आगे. ब्यूटीफुल प्लेस अगेन टू कैंप, टू हैव अ फन फिल्ड मॉर्निंग, कुक सम ब्रंच एंड गेट बैक रिफ्रेश. तो ये है दुधिया ब्रिज. This is the beautiful camping location दिया का. आप यहाँ आइए, कैंप करिए, have a one day picnic and you can always get back. Okay, यहाँ से थोड़ा आगे हम मेन रोड छोड़ने वाले हैं and we are going to hit the hills on a very narrow village road, less accessed and पूरा खाली रहता है and it goes to a waterfall called Mukti Khola, but we are not going there. We'll take this road to hit a place called Tingling back on this highway. So that's the plan today and on the way हम लोग आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे. So stay tuned guys. तो यहाँ से रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए हम सेल्फी स्टिक डाउन करेंगे. And now again with the selfie stick down, we are starting our ride back into the narrow road. पहले ऑफ रोड मोड में डाल दिया है बाइक को. नाउ वी आर गुड टू गो. ये छोटा सा गांव है which will take hardly 2 minutes to cross, hardly 50 odd houses. So और इसके बाद जो इतना सुंदर नज़ारा हो जाता है इस रोड का, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. तो इतने acute hairpins पे always take the wider angle. तो जब सामने से ट्रैफिक आता है तो ये होता है, best is to put your bike in the gear, take some rest, check your traction. Okay, कच्चा रोड तो नहीं है and put your feet on the rear brake. Only then start. अब अगर आप rear brake बिना दबाए क्लच दबा दिए तो इतने स्लोप पे गाड़ी चली जाएगी नीचे and you will have a good fall. Okay, while coming out of a steep incline halt like this, do not worry about the traction. Let the traction go, but don't hold back. Just pump up your accelerator and move out. Don't stop. Absolutely amazing. I wonder if you can see whole line of trees. Can you see that running line of trees? That's not the place, but there is a similar place ahead where we are going right now, and it's a small hillock, small knoll, जिसके ऊपर ऐसे एक लाइन में रनिंग लाइन ऑफ ट्रीज है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ऊपर जाके जो नज़ारा दिखेगा, oh it's worth every damn second that you have
taken to come here, and you will fall in love with this place. तो ये ब्यूटीफुल शॉट लेने के लिए हम पूरा नीचे राइड कर रहे हैं, एंड वी विल बी राइडिंग बैक अगेन. आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क. मेरा ड्रोन वहाँ हवा में होवर कर रहा है, एंड यू नो आई एम गोइंग डाउन जस्ट फॉर दिस शॉट. बट यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, आके क्यूरियोसिटी में देख लेंगे. नो बडी विल स्टील. सो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट. इसीलिए आई कैन अफोर्ड टू कम डाउन हिल and ride back again while my drone hovers, and I'm sure this is going to be a beautiful shot. बहुत सुंदर दिखने वाला है ये शॉट, और it will be worth it. Wow, these roads are beautiful. बहुत ही सुंदर टर्न्स देखो, कितने सुंदर टर्न्स है यहाँ पे, and it's so much fun riding here. The views are mesmerizing. It just attracts you to keep coming here every goddamn Sunday. Very beautiful. So guys, this is the beautiful place I was talking about, and you are about to see it now in 3, 2, 1. Look at this beauty. वो ऊपर पेड़ कितने सुंदर लगते हैं. Last time when I had come, I had promised myself I'll come again and take the shot. This is pristine. Such places become your core memory, and how beautiful it is. We shall park the bike here. अगेन दोस्तों, ये ब्यूटी के बाद ये कचरा देखना बड़ा ही ख़राब लगता है. आई रिक्वेस्ट दी लोकल अथॉरिटीज टू पुट अ डस्टबिन हियर. इट वुड सेव द प्लेस फ्रॉम सच गार्बेज. और तो चलते आगे. आज की राइड यहीं समाप्त होती है. ये देखिए, विद दिस ब्यूटीफुल व्यू we are going back home now, refreshed, recharged, and ready to begin a new week again. Do not forget to like, subscribe, and stay tuned to the channel for more such beautiful locations. I'm pinning the location in the comment section. If you have such beautiful locations, do let me know in the comments. Thank you.